Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have completed reading with our chapter number 1 from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. Okay, so we have completed reading the chapter and in today's video we will solve the questions that are there in the chapter. So let's begin. Question first, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Okay, so in this question we have to tell the reason that why Mrs. Pumphrey was so much worried about her pet dog Tricky. Okay, so let's see the answer. Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is not well. Okay, so Mrs. Pumphrey is very much worried about Tricky. Why? Because he is not well, he is not having good physical condition. Okay, he has refused to eat food and had bouts of vomiting. और उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी हो रही थी, वो कुछ भी नहीं खा रहा था. ओके, ही वॉज रिफ्यूजिंग एवरीथिंग, इवन जो उसकी फेवरेट डिश थी वो भी वो नहीं खा रहा था एंड ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ वॉमिटिंग. ओके, शी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन और एनी अदर हेल्थ इशू. ओके, और मिसेस पम्फ्री को लग रहा था दैट जो ट्रिकी डॉग है ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, ही वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशन. ओके, और मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर हेल्थ इशू, बट स्टिल शी वॉज अवेयर फ्रॉम दिस थिंग that her dog is not at all in a good condition. Okay, next question, what does she do to help him? Is she wise in this? In this question we have to tell कि जब उनको realize होता है that Tricky is not in the good condition, his health condition is not at all good, at that time what does she do? Okay, to improve the health condition of Tricky उन्होंने क्या किया था? Okay, and secondly we have to tell that is she wise in this? जो उन्होंने solution ढूंढा था, okay, जो वो कर रही थी Tricky के साथ, क्या वो करते समय she was wise? Okay, so let's see the answer. She starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil and Horlicks apart from his main meals to improve his condition. Okay, so first of all we have to tell कि to improve the condition of her dog Tricky, what does she do? So she starts giving him extra snacks. Okay, apart from the 3 meals, right, apart from breakfast, lunch and dinner, she starts giving him some extra snacks. Okay, और snacks में क्या दिया करती थी? Like malt और we can say grain, cod liver oil, जो cod fish होती है उसका जो ऑयल था, उसके जो लिवर का ऑयल था, और हॉर्लिक्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ट्रिकी. ओके, she is not wise in doing so because overfeeding Tricky is worsening his condition instead of improving it, and we can say that she was not at all wise in doing so. उनका जो डिसीजन था कि वो ट्रिकी को कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स देंगी, दिस वॉज नॉट एट ऑल वाइज बिकॉज ओवरफीडिंग ट्रिकी, इस तरह से वो जो ट्रिकी को ओवरफीड कर रही थी, दिस वॉज द थिंग दैट वॉज एक्चुअली वर्सनिंग हिज कंडीशन इंस्टेंट ऑफ इम्प्रूविंग इट. राइट, सो ये जो ओवरफीड था इसकी वजह से उसकी जो कंडीशन थी that was worsening instead of improving. Okay, next question, who does I refer to in this story? So in this story who is I, जो I word है वो किसके लिए आया है? Who is I in this story? Answer, I in this story refers to James Herriot, the veterinary surgeon. So in this story I refers to James Herriot, Mr. Herriot, and who is Mr. Herriot? He is the veterinary surgeon. So the narrator of the story is James Herriot and he is the veterinary surgeon. Okay, next question, is the narrator as rich as Tricky's mistress? So in this question we have to tell that the narrator of the story, Mr. Herriot, who is a veterinary doctor, so we have to tell that is he as rich as Tricky's mistress, who is Mrs. Pumphrey, right? So we have to tell that Mr. Herriot is as rich as Mrs. Pumphrey or not. So let's see the answer. No, the narrator is not as rich as Tricky's mistress. So after reading the chapter it is very much clear that the narrator, or we can say Mr. Herriot, is not as rich as Mrs. Pumphrey. Okay, next question, how does he treat the dog? Okay, so in this question we have to tell the method of treatment that Mr. Herriot used, okay, that he used to improve the condition of Tricky. So let's see the answer. He takes the dog Tricky to his surgery. There he does not give much food to eat. Okay, so first of all he was very much aware from this thing कि अगर उनको ट्रिकी की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करनी है सो उन्हें ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री के घर से कुछ समय के लिए दूर करना होगा, उनको
उससे सर्जरी में अपने उस प्लेस में लाना होगा जहाँ पे वो सबका ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। इसीलिए वो ट्रिकी को लेकर अपने सर्जरी में आ गए थे। एंड देयर ही डज नॉट गिव मच फूड टू इट, और उनको पता था कि ट्रिकी की इलनेस का रीज़न क्या है, ओवर फीडिंग है, ओके। इसीलिए उन्होंने उसको वहाँ सर्जरी में ज़्यादा फूड नहीं दिया था। ही इंस्टेंट कट्स हिज इट्स फूड, बल्कि उन्होंने इनफैक्ट स्टार्टिंग के 2 दिन तो उसको बिल्कुल भी फूड नहीं दिया था। जो उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज थी, जो उसका कैलोरीज कंजप्शन था, उन्होंने बिल्कुल कट डाउन कर दिया था। ही कीप्स इट ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड ही वॉज नॉट गिविंग एनी मेडिसिन टू हिम, बट ही वॉज कीपिंग an eye, or we can say he was observing him a lot, and he was giving him one strict diet, okay. So this was the method of his treatment. He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities to improve his health, okay. So on the one hand he was cutting the extra calories, and on the other hand he was making him to go for physical activities, right. So these were the two things जिसकी हेल्प से वो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी चेंजेस, ओके. सो 2 days तक उन्होंने यही किया, एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे द नाइटर वॉज एबल टू सी some changes in Tricky's behavior aspect. It starts showing some interest in the surroundings. On the third day it whimpers, okay. So after the end of the second day, now finally वो उसकी condition थोड़ी सी improve हुई थी. At that time he started showing some interest, or we can say some response, okay. और जब third day आया था तब again some improvement was there. That's why he was making some feeble sound or feeble noise, okay. Next question, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest, okay. So in this question we have to tell that why the narrator was having this temptation to keep Tricky as a permanent guest in the surgery, okay. So answer, it is a temptation to keep Tricky as a permanent guest, okay. So this was the temptation, this was the desire in Mr. Harriet's heart to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. It is because Mrs. Pumphrey starts sending fresh eggs, 2 dozen at a time. The staff of Mr. Harriet eat these eggs, okay. So what was the reason for this temptation? The reason was that Mrs. Pumphrey used to send fresh eggs for Tricky, right, for Tricky's health, okay. And how many? 2 dozen at a time, okay. और वो जो एग्स थे वो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं दिया करते थे. वाई? क्योंकि उनको पता था कि ट्रिकी की इलनेस का रीज़न ही ओवर फीडिंग है, और वो ट्रिकी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट वहाँ पे दिया करते थे. सो वो एक्स्ट्रा एग वो ट्रिकी को नहीं दे सकते थे. सो द स्टाफ ऑफ मिस्टर हैरियट यूज टू ईट दोज एग्स, ओके. There come bottles of wine and brandy, okay. And after eggs, bottles of wine and brandy was also there. It is really a great thing for them. और वहाँ पे जो स्टाफ था उनके लिए it's like a celebration was there. He does not want to lose the luxurious inflow of good food, okay. और ऐसे में जो मिस्टर हैरियट थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो लग्जीरियस इन्फ्लो है, इतना जो लग्जीरियस लैविश वो डिनर करते थे, इतना लैविश लंच करते थे, ब्रेकफास्ट भी इतना लग्जीरियस हुआ करता था, राइट. सो इन सब को वो लूज नहीं करना चाहते थे. दैट्स वाई दिस टेम्पटेशन, दिस डिजायर वाज देयर इन हिज माइंड, ओके. Next question, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery, okay. So in this question we have to tell that why Mrs. Pumphrey used this word that it was a triumph of surgery. जब उनका डॉग ट्रिकी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो उसके लिए वो ये वर्ड्स क्यों यूज़ करती हैं, that it was like a triumph of surgery, okay. So let's see the answer. Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious according to her, okay. So for Mrs. Pumphrey, the recovery of Tricky was like a triumph of surgery. Why? Because his illness was very serious according to her. She was of the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention, okay. So Mrs. Pumphrey was very much worried about Tricky's health issues. और उनको क्या लग रहा था कि ट्रिकी के रिकवरी के वेरी फ्यू चांसेस आर देयर. हो सकता है ट्रिकी रिकवर ना कर पाए, और उनको लग रहा था दैट ट्रिकी नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ओके. दस हिज रिकवरी विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ सर्जरी अकॉर्डिंग टू हर, ओके. सो उनको लग रहा था कि ट्रिकी को बहुत सारी
मेडिसिन देनी पड़ेंगी और मे बी उसकी सर्जरी तक करनी पड़े, राइट। लेकिन जब वो फाइनली उनको पता चलता है कि उसकी जो रिकवरी हुई है वो विदाउट एनी मेडिसिन हुई है, ओके। सो दिस वाज लाइक अ अचीवमेंट ऑफ सर्जरी, दिस वाज लाइक अ बिग अचीवमेंट ऑफ सर्जरी अकॉर्डिंग टू हर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of a person do you think the narrator of veterinary surgeon is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? Okay, so in this question we have to tell about the narrator, and who is the narrator of this story? The veterinary surgeon, okay. So we have to tell that what kind of a person he is, okay. And secondly we have to discuss that what do we think that he was a tactful person as well as a person who is having a lot of common sense, okay. So what is our viewpoint that we have to write, okay. So let's see the answer. I think the narrator, a veterinary surgeon, is a very practical man, okay. So after reading the story we can say that yes, the veterinary surgeon, or we can say the narrator, okay, he is a very practical man, right. He is also tactful and has a lot of common sense, and we can say that yes, he is a tactful person. Tactful means a person who is having a lot of skills, right. So he is a skillful person, he is a very good doctor, okay, and he is also having a lot of common sense, right. He is kind-hearted and jovial kind of fellow, okay. He at once understands Tricky's illness, और वो इतने परफेक्ट थे अपने इस प्रोफेशन में कि जैसे उन्होंने ट्रिकी को देखा था, सो ट्रिकी को देखते ही वो समझ गए थे that he is not well. जब उन्होंने देखा that he was not able to walk properly, he is not able to breathe properly, so वो समझ गए थे कि इसकी इलनेस का रीज़न इसका ओवरवेट है, ओके. He wants to keep Tricky for a longer period. It may be his selfishness because he gets huge supplies from Mrs. Pumphrey for Tricky, but it is not a mean quality, okay. And apart from his being a a person with a common sense or a tactful or a practical person, one more quality is there in the chapter about his personality, about his character. और वो क्या है, जब हमने चैप्टर में पढ़ा था that he was having this temptation to keep Tricky for a longer period, okay. And why? Because it was like we can say वो थोड़े से सेल्फिश हो रहे थे, क्योंकि वो जो सप्लाईज था, ह्यूज सप्लाईज, और वी कैन से जो लग्जीरियस सप्लाई था फूड का, उस फूड को वो लूज नहीं करना चाहते थे. दैट्स व्हाई ही वाज हैविंग दैट टेम्पटेशन, ओके. स्टिल वी कैन नॉट से दैट इट वाज लाइक अ मेन क्वालिटी अबाउट हिम, ओके. Next question, do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Okay, so in this question we have to tell Tricky's reaction, okay. So now when finally he recovered and now it was time to go back home with Mrs. Pumphrey, so what was his reaction? Was he really happy? That we have to tell. And we also have to tell that now what will happen now. We have to assume, we have to take our guesses, we have to make our guesses that what will happen now after reaching home. Now मिसिस पम्फ्रे जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगी, कैसे बिहेव करेंगी, दैट वी हैव टू टेल, ओके. सो लेट्स सी द आंसर. Yes, Tricky was happy to go home as he really loved his mistress and the comfort of the lavish life that he used to enjoy at home, okay. So our answer is that yes, Tricky was really very happy when Mrs. Pumphrey was there to take him home. And why? Because he actually loved his mistress very much. He was very attached with his mistress because his mistress used to pamper him a lot, right. और वो उसको इतना ज़्यादा घर पे जो उसकी लाइफ थी, that was full of luxury, that was वेरी लेविश लाइफ वो घर पे इंजॉय किया करता था. दैट्स वाई वो घर जाते समय बहुत हैप्पी था. इट इज़ सीन इन वन फैक्ट. और हमारा जो आंसर है, इस आंसर को वी हैव टू जस्टिफाई, वी हैव टू गिव रीजन दैट वाई वी आर सेइंग सो. सो वी कैन से दिस थिंग ऑन दिस फैक्ट. व्हेन मिसेस पम्फ्री कम्स टू द सर्जरी टू टेक ट्रिकी होम, इट जम्प्स इनटू हर लैप. सो वी कैन से सो बिकॉज व्हेन मिसेस पम्फ्री वाज देयर टू टेक ट्रिकी, सो वो इतना एक्साइटेड था, वो इतना हैप्पी था कि वो नरेटर की आर्म्स में से तुरंत इमीडिएट एक जंप करता है और मिसेस पम्फ्री की लैप में चला जाता है. इट स्वॉर्म्स ओवर हर, इट ऑल्सो लिक्स हर फेस आउट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, राइट. सो इट वॉज सो एक्साइटेड, इट वॉज सो हैप्पी दैट इट वॉज शोइंग इट्स लव एंड अफेक्शन, राइट. इट वॉज लिकिंग द फेस ऑफ मिसेस पम्फ्री, राइट. इट वॉज बार्किंग. सो इन सब तरीके से वो अपना अफेक्शन, अपना हैप्पीनेस, अपना लव वो शो कर रहा था. सो वी कैन से दैट यस, ही वॉज वेरी मच हैप्पी दैट वो फाइनली घर जा रहा था ऑलमोस्ट आफ्टर 15 days, ओके.
I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. Okay, and second question was that what will happen now. Okay, so हम कह सकते हैं कि now Mrs. Pumphrey will be very careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily. Okay, so अब Mrs. Pumphrey भी इस बात को समझ जाएंगी कि ट्रिकी की हेल्थ के लिए ओवर फीडिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो अब वो भी एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगी फॉर हिज गुड हेल्थ और उसको डेली एक्सरसाइज के लिए भी लेके जाएंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, do you think this is a real life episode or mere fiction or is it a mixture of both? Okay, so in this question we have to tell our viewpoint that after reading the story what is there in our mind कि जो story में जो incident जो बताए गए हैं वो क्या केवल fiction है, it means वो क्या केवल imagination पे based है और they are real life episode जिनको हम reality में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं. Okay, and one more option is there or we have to tell that is it a mixture of both. Okay, that we can say that some episode are totally जो बिल्कुल imagination पे based है और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम real life में देख सकते हैं. So is it a mixture of both? Okay, so that we have to tell in this question. So let's see the answer. I think the story A Triumph of Surgery is a perfect mixture of real life episode and fiction. Okay, so according to our viewpoint, the story A Triumph of Surgery, it is a perfect mixture of both real life episode and fiction. Okay, some parts of the story are very real and can be seen in day-to-day life around us. And how can we say that it is a mixture of both? So we have to justify our answer. That's why we are saying that some parts of the story are very real. Okay, story के कुछ parts ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रियल हैं जिन्हें हम रियलिटी में देख सकते हैं अराउंड अस इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो. ओके, बट सम पार्ट ऑफ द स्टोरी आर मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव बट स्टिल सम पार्ट ऑफ द स्टोरी आर टोटली फुल ऑफ क्रिएटिविटी. दे आर टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. ओके, it may be possible for rich families to overfeed their pets due to love. Okay, now we have to explain that कि हमने कौन कौन से पार्ट्स में देखा जहाँ हमें लग रहा है कि ओके ये चीज़ें हम रियलिटी में भी देख सकते हैं और कौन से पार्ट्स हैं जहाँ हमें लग रहा है कि नहीं ऐसा तो रियलिटी में होना पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन में ही हो सकता है. ओके, सो दैट वी आर डिस्क्राइबिंग हियर दैट इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच फैमिलीज टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव. ओके, सो इन द स्टोरी वी हैव रेड दैट मिसेस पम्फ्रे यूज्ड to pamper the dog Tricky and she used to overfeed the dog, right? So it is quite possible कि जो rich families होती हैं वो due to love अपने dogs को इस तरह से overfeed कर सकती हैं. It is also not unusual for them to maintain a vast wardrobe and pamper them just like a family member. Okay, and in the story we have also read that Tricky was having a vast wardrobe, right, full of coats. Okay, so उसके पास इतने सारे कोट थे that the entire wardrobe was full of his coats. सो ये जो चीज़ है ये भी ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है बिकॉज जो उसकी मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्रे शी वॉज रियली वेरी रिच. ओके, और जो रिच फैमिलीज होती हैं वो अपने पेट्स को ऐसे ही पैम्पर करती हैं जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर, राइट. सो ये भी ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है, हम रियल लाइफ में भी इस तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं. ओके, but it is something unusual for anyone to consume food which is given in the name of a pet's health. Okay, but what is the thing that is really quite unusual? वो क्या चीज़ है कि कोई उस फूड को कंज्यूम करे जो कि किसी पेट की हेल्थ के लिए आया गया है, उस फूड को कोई कैसे कंज्यूम कर ले, दिस इज समथिंग क्वाइट अनयूजुअल थिंग. ओके, सो विद द सपोर्ट ऑफ these reasons we can say that this story is a perfect combination with real life episode as well as fiction. Okay, so students, all the questions ends here. We have completed all the questions here. I hope all the questions and the chapter is very much clear to you all. In the next video we will start with our next chapter. So see you in the next video. Thank you.